Welcome to episode 1 of NRI Real Estate Podcast. My name is Sachin Mandoth. I'm based out of Canada and I'm very keen to learn more about NRI matters. With me, I have Bharat D Sarawgee. Bharat is a chartered accountant in India. He has 20 plus years of experience in NRI taxation and he specializes in guiding NRIs on buying and selling real estate in India and the taxation associated with it. Welcome, Bharat, to this podcast. Yeah, hello, hi, Sachin. भारत एनआरआईज का इंडिया के अंदर और कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट हो ना हो रियल स्टेट तो होता ही है लाइक दे ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ रियल स्टेट बीट इनहेरिटेड बीट जब उन्होंने खरीदा हो वो जब इनिशियल फ्लैट हो उनका करियर में सो एंड जब वो एनआरआई बन जाते All या NRIs have a dream to have a property in India, a house in India. And there are cases where the parents are having house in India, so automatically it's inherited properties also. सो कई बार भारत ऐसा होता है कि जब एनआरआईज ऐसी कंट्रीज में चले जाते हैं जहां उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है उसके बाद वो सोचते हैं कि आप वहां पे अपना घर खरीद लें यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया में और अपनी जो इंडिया की प्रॉपर्टी है वो बेच के डाउन पेमेंट दे दें एंड एंड क्योंकि मैं भी एक एनआरआई हूँ तो मेरे लिए जब इंडिया से आप कुछ साल बाहर चले जाते हो तो चीजें ब्लैक बॉक्स बन जाती हैं और आप बहुत दूर होते हो ऑब्वियसली सो उस केस में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट एन एनआरआई शुड नो बिफोर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया Yeah. Sachin, मैं last 20 years से practice में हूँ and I've been dealing with lot of NRI clients and OCI clients. एंड सबको प्रॉब्लम होती है जब वो प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं इंडिया में. देखिए, खरीदना इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, पर जब बेचते हैं तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम्स इन. एंड आउट ऑफ माय दिस 20 years of experience, आई हैव प्रिपेयर्ड अ चेकलिस्ट कि अगर ये चेकलिस्ट हम फॉलो करें तो हम अपने इश्यूज को, हम अपने प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं. सो आई एम शेयरिंग दिस चेकलिस्ट विथ यू राइट नाउ. या, so you can see that while selling you have a lot of questions in your mind, like how will what are the kind of documentation I need to do, what documents I require, what are the taxes implication, like क्या tax pay करना है, क्या TDS कटेगा. एक नया वर्ड सुन रहे हैं एनआरआईज की, TDS कटेगा. मैं उसके बारे में भी आपको गाइड करता हूँ. फिर बैंक में फंड आने के बाद मैं कैसे उसको वापस रिपैट्रिएट करूं, वापस कैसे मैं कनाडा लेके जाऊं या ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊं. सो we are trying to solve all these issues through this checklist. So first let us try to understand हम एज ए एनआरआई हम क्या बेच सकते हैं, हम क्या नहीं बेच सकते हैं. You see, NRIs are not allowed to hold any agricultural land, farmhouse or plantation. But there could be scenario situation where NRIs had purchased those land when they were resident. So now have they become NRI and they want to dispose it off. So they can very well dispose of agricultural land, farmhouse land, but they can only sell it to a resident person. If you see the second line, they can sell agricultural land, farmhouse, plantation, but only to resident. They cannot sell it to any other NRI or OCI. Similarly, like for other kind of land, normal land, commercial, residential, they can sell it to anyone, a resident, NRI, OCI. So okay so what I feel, there are 4 steps which we should follow while selling a property in India. We should have a proper planning. Planning में क्या क्या आता है, we will discuss that. Then tax implications क्या है, TDS क्या है, मैं वो आपको गाइड करूंगा. थर्ड, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं एक एग्रीमेंट को, उस एग्रीमेंट में क्या मेंशन होना चाहिए, और एग्रीमेंट करते समय हमको क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या फॉलो करना है वो मैं बताऊंगा. एंड रीपैट्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेकिंग द मनी बैक. सो व्हेन इट एक्चुअली कम्स काफी टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राइट, सो व्हेन मतलब इट कम्स टू सोचने की प्लानिंग, जरूरत है right, this is the, हाँ you see, this is all very very important points. Up, you are ओके sitting in Toronto or in Canada, sorry, in Toronto or in US or in Australia or in UK. आप लंदन में बैठे हो और आपको पता नहीं है कि कलकत्ता के बालीगंज में क्या रेट है, या चेन्नई के कोयम्बेडू में क्या रेट है, या हैदराबाद के चार मीनार एरिया में क्या रेट है, एंड यू हैव अ प्रॉपर्टी देयर. यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्राइस. सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या प्राइस में उसको बेचूं. So that price expectation is very very important.
So how do you determine that price expectation? You see, there are few websites in India like the Magic Break or other online brokering, online property sites where you can get some information about what is the pricing of that area. But मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, लाइक आप ब्रोकर्स को कॉल करो जो लोकल ब्रोकर्स है वहां पे, एंड एटलीस्ट 2 से 3 ब्रोकर्स से आप बात करो. और जब आपको बेचना है प्रॉपर्टी, तो आप जब आप बेचने जाओगे तो आप ब्रोकर को बोलोगे कि मुझे प्रॉपर्टी बेचना, तो पहला ब्रोकर आपको लाइन बोलेगा, अरे मार्केट इज नॉट वेरी गुड, यू सी अभी प्राइस बहुत खराब है, आपको इतना ही प्राइस मिलेगा. मैं बोलता हूं आप उल्टा काम कीजिए. आप ब्रोकर को बोलिए कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है इस एरिया में, इस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदनी है. देन ही विल गिव यू अ करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसिंग. And you should have at least 2 to 3 brokers. Then only you will have a good information about क्या pricing उस area में चल रहा है. Second point, it's a good trick. Yeah, it's a very practical tip, very practical tip. Then due diligence of the buyer. You see, this is very important. Due diligence of the buyer. आप किसके साथ डील कर रहे हो आपको पता होना चाहिए. इंडिया में there are few land shark, land mafias who target specifically NRIs. वो जानते हैं कि NRI इतने दूर से यूएस से आ रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी बेचने, उसके पास टाइम नहीं है, उसको फंसा दो, लीगल कोई इश्यूज कर दो, एंड बेचारा वो पौने पौने दाम पे आपको देके जाएगा. सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसको बेच रहे हो, उसके लिए आप एक ड्यू डिलिजेंस कीजिए. आप ड्यू डिलिजेंस कैसे कर सकते हो? देयर आर लॉट ऑफ गूगल सर्च, देयर आर लॉट ऑफ साइट्स व्हिच हेल्प यू. आप एक गूगल सर्च ही कीजिए उसके नाम से, उसके उसके पैन नंबर को लेके. देयर आर सर्टेन पीपल हु गिव यू सर्विस, लाइक आवर कंपनी आल्सो गिव अ सर्विस ऑफ ड्यू डिलिजेंस ऑफ बायर, जहां पे हम बायर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लिटिगेशन के बारे में बताएंगे. क्या ये लिटिगेंट है? अगर वो लिटिगेंट है, आपको उसके साथ काम करना ही नहीं चाहिए. सो इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही बायर चूज करो जो जेन्युइनली आपके साथ ट्रांजैक्शन करे बिना आपको गलत आपके साथ किए. इफ यू सी दिस सर्कल रेट बाय गवर्नमेंट फॉर स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बिलो द सर्कल रेट करते हो, तो गवर्नमेंट विल एज्यूम दैट यू हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी एट सर्कल रेट, एंड आपके टैक्सेशन सर्कल रेट के हिसाब से कैलकुलेट होंगे. बट उन्होंने एक इसमें एक लीवे दिया है कि अगर आपका सर्कल रेट और एक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 10% का डिफरेंस है, देन दे विल एक्सेप्ट योर प्राइस. बट इफ इट इज more than 10%, then the government will assume that you have sold it for at the circle rate. So it is very important, whenever you are selling the property, you should have a full information what is the circle rate of that property. So that will help you to determine आपको वो उस प्राइस में बेचना है कि नहीं बेचना है. Then there are situations where there's a property in India and you are not paying the property taxes, the municipal taxes. आप सोसाइटी के ये मेंटेनेंस बिल नहीं क्लियर कर रहे हो, तो बिफोर सेलिंग इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये सारे टैक्सेस आप पे कर दो, एंड आप अपने सोसाइटी से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट लो. इनफैक्ट म्युनिसिपल भी आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट देती है कि कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं है. सो ये सब सारे प्लानिंग आपको पूरी करने पड़ेंगे बिफोर यू अप्रोच अ बायर and before you execute a transaction. अब now the moving forward, you should have a proper information about what is your expected capital gain. It should not happen that after you have sold the property, then you come to know this is my capital gain, it comes as a shock to you. So there should be a proper understanding of your expected capital gain. How capital gain is calculated, I'll explain you that also. Then there is something called lower deduction certificate. You see, in India, whenever an NRI sells a property, the buyer has a compulsory obligation to deduct withholding tax, or in India we call it TDS. And that tax is basically an advance tax which the buyer pays on your behalf. And that tax is 20% plus surcharge plus cess. So this is a very big blow for in your cash flow. But like this TDS can be adjusted with your actual tax payment. Then there could be scenario where this is your ancestral property, it's a parental property, and your parents are no longer, so the parents have made a will or may not have made a will. If they have made a will, then the parents will should be probated, then only you will be able to sell it.
Similarly, if the parent does not have a will and then you have to apply for a succession certificate. So what I believe, आपके पास ये सारी चीजें ready होनी चाहिए, then only you are ready to go to execute a sale agreement. Let us try to understand what is the capital gain. Simple terms, sale price minus index cost. India में the government has given you one benefit that ये जो inflation होता है हर साल, उसका benefit ले सको अपने purchase price में. सो सपोज मैंने 2001-2 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज 5 लाख रुपए में, एंड मैं आज उसको बेच रहा हूं, आज मैं उसको बेच रहा हूं 10 लाख रुपए में. तो नॉर्मल नॉर्मल इन आप क्या समझोगे कि यू हैव मेड अ गेन ऑफ 10 lakhs minus 5 lakhs. But if you calculate the index cost, it may get multiplied by more than 3 times or more than 4 times. So what would be my cost today? It may becomes 15 lakh rupees as index cost. In this scenario, I will incur a capital gain loss. So we should understand what is a index cost. As I mentioned earlier, the buyer has a compulsory obligation to deduct 20% as withholding taxes. So whatever is your sale consideration, जो आप बेच रहे जिस प्राइस में, buyer उस प्राइस पे 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस आपका विदहोल्ड कर लेगा एज एन एडवांस टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड आपको बाकी बैलेंस पेमेंट करेगा. उसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली यू कैन अप्लाई फॉर अ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट विच इज एन ऑनलाइन फॉर्म 13. You can apply or you can claim it as refund while after filing your income tax return. Then we should also know about there is something called exemption. Suppose आप कोई एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो कैपिटल गेन उसमें आया, उसी अमाउंट से अगर आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, देन इंडिया में उस पे लिए कोई टैक्स नहीं है. That is called exemption under section 54. Thank you, Bharat, for giving so much practical and valuable tips to NRIs while selling their properties. This was part 1 of our video. We'll have part 2 as well, which will cover further details on what steps should NRIs take while selling their properties in India. And if you have any questions or want to avail services of Bharat, the link is in the description of the bio of this YouTube video, and you can contact Bharat directly from there. Thank you for listening. Please like, share, and subscribe to the channel. Thank you, Sachin. Thank you for this podcast.